So class 4, we have already discussed chapter 1 and today we will discuss chapter 2, 3 and 4. So be ready with chapter 2. Be ready with chapter 2. These simple things. These simple things. First of all, who is the poet of this poem? The question is, who is the poet of this poem? Tell me the answer. These simple things. Who is the poet of this chapter, of this poem? Nishtha? Nishtha, turn on your mic. Ruskin Bond. Ruskin Bond. Bond. Ruskin Bond. Okay, very good. Listen to my questions and answers everyone. मेरे क्वेश्चन और आंसर्स को ध्यान से सुनिए कि मैम ने क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या उसका आंसर है. Okay, so who is the poet of the chapter? These simple things. So the answer is Ruskin Bond. Answer is Ruskin Bond. Next question is, the poet is talking about the poet is talking about the laughter of a dash. The poet is talking about the laughter of a dash. किसके laughter के बारे में poet बात कर रहे हैं? Anyone can reply? Shambhavi. Wait a minute. Yes, Shambhavi. Yes, Shambhavi. Ma'am, child. Child, yes. The laughter of a child. Okay, next question is, what is the meaning of patch? Patch. What is the meaning of patch? Anya. Anya, turn on your mic, Anya. Anya Sachan. Turn on your mic, beta. Patch means a small piece of ground. Next is, now tell me the group. Tell me the group of these things. Now listen to me. First is pencils, erasers, rulers. Pencils, erasers, rulers. So what is the group? What is the group? Ansh Chauhan. Ma'am. Yes. Stationery. Stationery. Very good. Very good, Ansh. Turn off your mic now. Yes. Next is gold, silver, iron. Gold, silver, iron. Aradhya. Metal. Yes, metal is the right answer. Very good, beta. Next is spoons, knives, forks. Spoons, knives, forks. Okay. Alia Praveen. Alia? Yes, ma'am. Yes. Yes, Anya. Alia Praveen. Ma'am ji. Yes. Ma'am ji, utensils. Utensils.
Just a minute, okay? Just a minute. What is the meaning of spectators? Aditya. Aditya, what is the meaning of spectators? Aditya. मैम क्या कह रही हो? What is the meaning of spectator? Spectator. What is the meaning of spectator? Aradhya. Aradhya. Okay, Aditya, turn off your mic. Yes, Aradhya. Aradhya. Yes, beta. Yes, Aradhya. Now turn on your mic. People who watch. Spectator means people who watch. वह लोग जो कुछ देखते हैं, कुछ चीजों की देख रेख करते हैं. Spectator means people who watch. ठीक है? Chapter 3. Now be ready with chapter 3, everyone. Chapter 3. Be ready with chapter 3. Wonderful Kalam. Wonderful Kalam. Okay, so it is the chapter about Mr. APJ Abdul Kalam, who was a famous scientist, and India's 11th president. India's 11th president. कौन है APJ अब्दुल कलाम? जो कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे. वो अब उनकी डेथ हो चुकी है अब. और 11वें 11th प्रेसिडेंट थे. प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति. इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे. So I can ask a question, who was APJ Abdul Kalam? Now give me the answer. Shashank, be stable. Shashank. Who was Mr. APJ Abdul Kalam? Who was Mr. APJ Abdul Kalam? Nishtha? Yes, Nishtha? Ma'am, he was a pioneer of India missile and nuclear weapons. Listen, Nishtha, listen. In one, give me the answer in one word. One word or two words. Only just one word or two words. मैम what में 2 word में देना है? Yes. मैम he was a pioneer and he was 11th president. Yes. He was a famous scientist. Okay. अब one word में कैसे देंगे? Famous scientist and 11th president. वो हमारे 11th president है. And कौन है? Famous scientist है. Scientist. Yes. Okay. Very good. Now turn off your mic. Where was, sorry, When was Mr. APJ Abdul Kalam born? When was Mr. APJ Abdul Kalam born? Born means होता है जन्म. उनका जन्म कब हुआ था? आराध्य? 15 October 1931. 15th October 1931. Very good, Aradhya. Very well done. And what was the name of Mr. APJ Abdul Kalam's father? What was the name of Mr. APJ Abdul Kalam's father? Priyanshi? There is some network issue, sir. Aditya?
आदित्य कुमार, यस आदित्य, टर्न ऑन योर माइक। मैम हमें कुछ पूछना था। यस आदित्य, what is the name, sorry, what was the name of Mr. APJ Abdul Kalam's father? क्या नेम है उनके फादर का? आराध्य, आराध्य, टर्न ऑन योर माइक। Jainulobbin. Yes, very good. Jainulobbin was his name. Jainulobbin उनका नेम है। चलिए नेक्स्ट इज, what is the meaning of pivotal? What is the meaning of pivotal? Pivotal. What is the meaning of pivotal? Shambhavi, मैम जी सेंट्रल। central, pivotal, central. Very good. What is the meaning of inspire? What is the meaning of inspire? What is the meaning of inspire? Adit, Palak Chaube. What is the answer, Palak Chaube? Palak Chaube. फिर इन्फ्लुएंस। ओके, दोनों में से एक आंसर भी करेक्ट हो सकता है, मोटिवेट या फिर इन्फ्लुएंस। So now we are talking about degrees. Just a minute. Degrees. Okay. So, जैसे for example, we have three types of degrees: positive, look at the screen everyone, comparative, and superlative. And superlative, ठीक है, मीन्स पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। यहाँ पर कंपैरिजन को क्यों यूज करते हैं हम? कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन मीन्स तुलना करने के लिए। जब हमें दो लोगों में से एक को अच्छा चूज करना है तो हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। मीन्स अच्छा मीन्स गुड, बेटर, बेस्ट मीन्स अच्छा, उससे अच्छा, और लास्ट में सुपरलेटिव में सबसे अच्छा। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। So these are degrees of comparison. Hot, hotter, hottest, गरम, उससे गरम और सबसे ज्यादा गरम। यहाँ पर एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है इन्हें, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। सुंदर, उससे ज्यादा सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल में सबसे ज्यादा सुंदर। मोस्ट ब्यूटीफुल इन्हें कहा जाता है बेटा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, फर्स्ट डिग्री इज पॉजिटिव, सेकेंड इज कंपैरेटिव एंड द थर्ड इज सुपरलेटिव। ओके, गुड, बेटर, बेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल।
चलिए अब आगे देखो एडजेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले एडजेक्टिव्स के बारे में देखो कि एडजेक्टिव्स क्या है। एडजेक्टिव्स, it tells us, it tells us more about noun or pronoun. For example, he is a smart boy. So the word smart is an adjective. Smart क्या है? Adjective है. She is an intelligent girl. So the word intelligent is an adjective. I have a blue dress. The word blue is an adjective. She is beautiful. तो beautiful word is an adjective. वो किसके बारे में बता रहा है? किसकी क्वालिटी बता रहा है हमें? नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है, इसीलिए उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन्हीं एडजेक्टिव से फॉर्म की जाती है, इन्हीं से बनी होती है। ये एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। गुड, he is a good boy. Cold, the tea is cold, the tea is hot. Beautiful, she is very beautiful. So these are adjectives, और इन्हें adjectives का ही हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो अच्छा है, वो उससे अच्छा है, और वो तीसरा वाला सबसे ही ज्यादा अच्छा है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। Now next question is, he can give dash to whom he likes. He can give dash to whom he likes. Toys, books, monies. आदित्य, मैम मनीष आएगा। money. Very good, very good beta. Now turn off your mic. Next is, I shall dash myself. I shall dash myself. Dress, bath, groom. Shambhavi, मैम ड्रेस। dress. Very good. Next question is, it is late. It is late. Bring your dash. Books, slate या pencils. आराध्य, मैम स्लेट। slate. Very good. चलिए, okay.